नमस्कार आपण मानक समस्त को ये वीडियो बहुत बहुत स्वागत। आज रही वीडियो में आपण सहित +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 4 रो यूनिट 4 द चेंजिंग नेचर एंड इंडिया स्टेट रो किछि 3 मार्क्स क्वेश्चन आपन सह शेयर करबी। मैं पूर्व मध्य यूनिट 1 2 3 रो ऑलरेडी 3 मार्क्स क्वेश्चन शेयर कर साची। जदि आपन देखि नांती ताले चैनल को जाय देखि पारबे। तो चलो तो स्टार्ट करबा। आ वीडियो आगो को म कहबे जे आपन माने पीडीएफ को किपरि भाबे पाइ पारबे। Write the 3 important directions of industrial policy after the integration of reform। माने कोन रिफॉर्म पर बा रिफॉर्म प्रारंभ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थिला तार तीनोटी इंपोर्टेंट माने गुरुत्वपूर्ण तीनोटी जो डायरेक्शन थिला से तीनोटी डायरेक्शन दियो ना। आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ रिफॉर्म द industrial policy moved in the 3 important directions। so तीनो डायरेक्शन हला कोन। द फर्स्ट वाज द एलिमिनेशन ऑफ कैपेसिटी कंट्रोल बाय डी रिजर्विंग एंड डी लाइसेंसिंग इंडियन इंडस्ट्रीज व्हिच वर सब्जेक्ट टू लाइसेंस फेलियर। माने कोन जो मानकर लाइसेंस नै कि डी रिजर्वेशन से माने कोन कर एलिमिनेट से जिबे बाहर जिबे आ से माने जल्दी कोन लाइसेंस पे लाइसेंस करबे। द सेकंड चेंज माने कौन सेकेंड चेंज जो संबंधित द वीकिंग माने जो दुर्बल प्रोविजन्स द मोनोपोली एकाधिकार रेस्ट्रिक्ट द ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। दिस वाज एक्ट डन फैसिलिटेट माने कौन सहज करबा तू कौन विस्तार कर सहज विस्तार करला कौन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लार्ज फिल्म्स। द थर्ड चेंज वाज रिलेटेड टू इंट्रोड्यूशन ऑफ पॉलिसीज ग्रेडेड फॉर प्रमोटिंग ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो फॉरेन मध्य इन्वेस्टमेंट कले जो थर्ड ये तो ये थिला कौन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो तीनोटी गुरुत्वपूर्ण दिग बा डायरेक्शंस। व्हाट आर द रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। इट इज इम्पोर्टेंट टू पॉइंट आउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 in India did not have any specific policy package for agriculture। This was based on the occupations that freeing agricultural markets and liberalization external trade and agricultural commodities were to provide price incentives leading to enhanced investment and output in the agricultural sector। Simultaneously, broader trade liberalization would shift intersectoral terms of the trade in favor of agriculture। तो ये कौन एग्रीकल्चर रिफॉर्म। नेक्स्ट देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन द फाइनेंशियल लिबरेशन माने कौन वित्तीय उदारीकरण कौन ना। द रिफॉर्म्स ब्रॉट अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर विथ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल रिफॉर्म्स। एटा गोटे कौन सब जी सब रिफॉर्म अच्छी तार गोटे कौन सिविल गोटे ओवरऑल फॉर्म्स गोटे गुरुत्वपूर्ण पार्ट कोटा फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन। डिपेंडेंस अपॉन द इंटरनेशनली मोबाइल फाइनेंस कैपिटल वाज प्रमोटेड। मेजर्स were taken to increase the credit creating capacity of banks to reduction of the statutory liquidity and cash reserve ratio while offering them greater loyalty in using the reason of liquidity। Additionally, an attempt was made to increase competition। This was done to through the structural changes in the bank sector. Lastly, bank providing the greater freedom of determining their asset profiles। Bank were also permitted to cross the firewall that separated the banking sector from the stock market in India। So next we discuss exchange rate policy। What is exchange rate policy? In order to change the terms of exchange rate determination, the Indian government moved from administrated exchange rate to situation by the end of decade 1990s wherein there was a unified means कौन एकीकृत मार्केट डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीस। एक्सचेंज रेट कौन रुपीस डिटरमाइन कला। दिस वाज फुल्ली कन्वर्टेबल माने कौन अनुकूल है विथ फॉर कन्वर्टेबल फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। दिस the inflow of portfolio capital was permitted। Certain companies were allowed to raise capital abroad and external commercial borrowing was the also to selected companies। Next, what is right the distinction between civil and political society। civil and political means कौन पार्थक्य कौन distinction कौन ना। Chatterjee has suggested that the society especially in the context of India needs to be understood in terms of civil society and political society। Civil society according to him consists of largely urban middle classes and the spare of that seeks to congruent with the normative morals of bourgeois civil society representing the dominion of capitalist hegemony।
On the other hand, political society includes huge numbers of urban poor and rural population. These people have formal status as citizen and can exercise their franchise, but they would not relate to the state in the same way in middle classes do, nor Indian government agencies that the same way the may claims in the Indian government are governed within the teamwork from contemporary, contextual and the unstoppable arrangement arrived at through to direct political negotiation. नेक्स्ट देखिए राइट सर्ट नोट ऑन मिक्सड इकोनॉमी तो मिक्सड इकोनॉमी मीन्स कौन इंडिया एम्बार्सड द यूनिक concept of mixed economy as colonial regime had made economic consolidation the priority. It was priority कौन इंडिया एम्बार्सड माने कौन अंगीकारी करवा द यूनिक कॉन्सेप्ट को कौन अंगीकारी करता मिक्सड इकोनॉमी और द कॉलोनियल रेजिम had made economic consolidation the priority. It was understood that his economic resurgence पुनरुत्थान cannot be accomplished by the private sector alone. The state had responsibility to ideal with the problem of unemployment, poverty, बेकारी दारिद्र्य, illiteracy, निरक्षरता, regional imbalance and more. The public sector also faced its challenge with inadequate infrastructure, power, roads, etc. Infrastructure, power, roads, etc. Those in India adopt the unique concept of mixed economy. Next देखिबा right short note on rational exposed by Khuli for the economic reforms 1991 तो rational exposed माने कोन तर्कसंगत समर्थन की करले खोली करथले for the economic reforms of 1991 after the period of national emergency of in the 1970s. Indira Gandhi shifted the focus of state policy from गरीबी हटाओ to economic माने कोन 1970 emergency national emergency परे इंदिरा गांधी शिफ्ट करले ना फोकस कोड करले ना स्टेट पॉलिसी गरीबी हटाओ ले पॉलिसी को से फोकस करले काहे कि ना इकोनॉमिक अर्थनीति को ग्रोथ करिया पे. This result in the integration में कौन दिखे a state and capital alliance. This single a move away from the welfare functions which the Indian state had been prioritizing earlier. Following the Rajiv Gandhi work towards bringing liberalization policies out faced many difficulties. As during this time, the Indian business felt threatened by the possibility of intense competition among coming in the liberalization and inflow of foreign capital and investment. Next देखिबा right short note on India state under the liberalization. Indian economy and society have witnessed from the large scale liberalization privatization as part of a globalization policy. This most important policy changes that were adopted by Indian state where most of the public sector undertaking were sold to the private players. Licensing was liberalized from the industries, actively encouraging फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ कौन जो फॉरेन मन को डायरेक्ट इन्वेस्ट कराया कौन कला ना से प्रोत्साहन कला इन अक्रॉस द सेक्टर्स फ्री फ्लो गुड्स सर्विस टेक्नोलॉजी लेबर एंड कैपिटल वाज इनकरेज्ड एंड प्रमोट एज कर द बॉर्डर्स एनवायरमेंटल एंड अदर क्लीननेस वेर लिबरलाइज्ड. Special economic zones and private economic areas were being set up. Large multinational corporatives were given land or other expansions to operate, not open considering the element of the indigenous देशीय राज्य इंडिजिनियस माने कौन देशीय देशज एंड अदर लोकल पॉपुलेशन. नेक्स्ट देखिबा तो इथले कौन इंडिया स्टेट अंडर द लिबरलाइजेशन गोटे देखि. नेक्स्ट देखिए राइट द शॉर्ट नोट ऑन डिसकंटेंट्स अमंग द पीपल ऑफ इंडिया आफ्टर एडॉप्शन ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी. तो कौन डिसकंटेंट्स माने कौन असंतोष कहीं लोक माने कहीं असंतोष भागले आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी को एडॉप्ट कला पर लोक माने कहीं असंतुष्ट पड़ला. This liberalization policies of course brought very strong discontents among the people of India, especially from those who land and livelihoods were taken away. जो कौन land और livelihoods कौन पौला चली गला. They mobilized themselves against the grabs of state big development project. ए द्वारा कौन से जो जगह लैंड रोड चली गला कहीं ना लिबरेशन पॉलिसी पे. तो से कौन अंतोष हेले इन कौन डिसप्लेसमेंट आगुड़ जगह पड़े प्राइवेटाइजेशन सब गुड़ा कौन ना गवर्नमेंट टू प्राइवेट हो गला एंड अदर मेजर्स व्हिच वाज सप्रेस्ड लार्जली बाय द
respective states using extreme repressive measures. This is led the emergence of thousands of people's movements across the country demanding the basic rights of the communities and local people. Movements were the constitutional to the regions and issue based across the country. नेक्स्ट देखा व्हाट इज द वेलफेयर स्टेट गोटे जनमंगल राष्ट्र कहले कौन बुझा ए वेलफेयर स्टेट इज ए स्टेट और गवर्नमेंट मीन द वेलफेयर मैंने कौन जनमंगल करवा और द वेल बीइंग ऑफ द पीपल लोक मान भल कार्य करवा इन अदर वर्ड्स अन्य अर्थ में इट इज ए गवर्नमेंट व्हिच प्रिमिनरली एम्स टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल माने ये गोटे सरकार जे लोक मान मंगल लक्ष्य थाए ए वेलफेयर स्टेट टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स वेलफेयर मैंने कौन से सब तार सिटीजन और स्टेट सब कौन जन मंगल कथा चिंता करता है कि वेलफेयर स्टेट वेलफेयर इम्प्लाइज द बेनिफिट्स डिफरेंट मोड्स ऑफ द एड प्रोवाइडेड द टू द पीपल इट कैन बी इन द टर्म्स ऑफ मनी सर्विस हो कि कैश पेमेंट हो सब्साइड्स हो कि कन्सेसनेस हो ग्रांट्स हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो कम अंडर द टर्म्स ऑफ वेलफेयर सब कौन टर्म जा सब वेलफेयर भितर जाऊँगी ऑल दिस वेलफेयर मेजर्स अमाउंट द रेडिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूट पुनः विभाजन करवा आउ तो गवर्नमेंटाल रेवेन्यू टू द नेटली आ सरकार जो आय हो कौन पुनः विभाजन करवा तो ये हूँ वेलफेयर स्टेट गोटे लक्ष्य कहीपर टर्म कहीपर तो ये यूनिट 4 हूँ 2 मार्क्स क्वेश्चन जदि आप पीडीएफ चाहते तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक अच्छी से जॉइन होतु यार पीडीएफ मिल जाए तो थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो।